Good morning. Good morning, everyone. Good morning to dear students. Morning to dear students. Welcome to e-lecture series of pharmacy practice. So, all students, they are requested, if you have any question, you can write in the comment box. As we are starting the session of introduction of the pharmacy practice, some basic scope and objective of the pharmacy practice. So first, we will start with the introduction. See, pharmacy practice, the syllabus that has been revised in a GTU in 2017-18, and it has reached today in a 7th semester. So in 7th semester, there is a new teaching scheme and new syllabus as well. So one of the subject, that is the pharmacy practice, the code of this subject, that is VP 703 TT. This subject contains only theory. It does not have practical aspect. Here the theoretical portion is there. We will see this thing in the examination scheme also. So just here we are starting about the introduction to pharmacy practice. Meanwhile, the session, if any student have question regarding this subject, then they can ask in a chat box. They can write the question in a chat box or comment box. So first one, we need to consider about the scope. See, in the changing scenario of pharmacy practice in India, for the successful practice of hospital pharmacy, the students, they're required to learn the various skill. For example, drug distribution, drug information, and therapeutic drug monitoring system for the improved patient care. जनरली इन इंडिया, अगर हम कंसीडर करें इंडिया की बात, अगर करंट सिनेरियो की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि हम डे बाय डे, अभी कोरोना सिचुएशन थी तो उसमें भी हमने
हॉस्पिटल फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है. So the student should have the very basic knowledge as a skill. If you are considering, then they should have very basic knowledge about the drug distribution, how the drug that will be distributed, then the information about the drug. See, कौन सी ड्रग कहाँ पे यूज करनी है, कौन सी डिसीज कंडीशन में ये सब ड्रग यूज होगी, तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल स्टूडेंट के पास होनी चाहिए. Then the third thing that is very much important, that is the therapeutic drug monitoring. Therapeutic drug monitoring, that means optimization of the drug regimen. Optimization करना पड़ता है drug regimen का, और that is required specially to maintain the constant monitoring of drug concentration in a blood. So ये बहुत ही important है. Then in community pharmacy, the second aspect that is required, that is the community pharmacy. The student, they will be learning the various skill such as the dispensing of drugs, then responding to minor ailments. बहुत सारी डिसीज जो रहती है, तो ब्रीफली फॉर एग्जांपल किसी को फीवर आ गया, तो फीवर के लिए भी पेशेंट अगर कोई आता है, तो स्टूडेंट हैव थorough knowledge about the minor ailments, and by providing suitable safe medication, उसके लिए safe medication क्या है, तो उसके बारे में knowledge रहना चाहिए. Then patient counseling for the improved patient care in the community setup. See, very much we are lacking in this scenario, because patient counseling, that is very much important, but we are not doing so here in India. We do not implementing such type of method, so we are not doing we are not providing any type of patient counseling. And anyhow, the patient which comes to the pharmacy store, see, it is very much important in the community pharmacy, but if we are considering about the hospital pharmacy, or if we are considering the drug store, then patient, they are not asking, and as well pharmacists, they are not giving the information about the particular product. So here one of the things that is required in a scope, if we are considering, then one of the things, one aspect we need to discuss, that is the hospital pharmacy, and another aspect we need to learn, or the scope of this subject, that is related to the community pharmacy. So these are the basic scope. Then the objective, we should have, or the students know, the various drug distribution method in hospital. Drug distribution system क्या है, that should be aware. Then appreciate the pharmacy store management, then inventory control, how to control other requirement of the store, that is also very much important. Then monitor the drug therapy of patient through medication chart. See, in some hospital, if we are considering Wocard or Sterling or Zydus, then the medication chart, they are also observed by the pharmacist. So medication chart के ऊपर से कभी-कभी पता चलता है कि डोज में क्या चेंजेस करना है, डोज में क्या ऐड करना पड़ेगा, या फिर ये मेडिकेशन की जरूरत अब कब तक है. So this can be observed by the medication chart. Then obtain the medication history, interview and counsel the patient. Again, we are lacking in the counseling of the patient. Medication history, वो भी बहुत important role है. Especially अगर हमारे पास कोई पेशेंट है और ऑलरेडी उसके पास, उसको एक डायबिटीज कंडीशन है, डायबिटिक कंडीशन में है, और इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन फॉर द कार्डियोवास्कुलर थेरेपी, देन वी शुड हैव द थorough नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सच अ पेशेंट. तो कभी-कभी एलर्जिक कंडीशन भी रहती है, तो एलर्जिक कंडीशन के लिए भी वी शुड हैव द थorough नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. Then identify the drug related problems. Then detect and assess adverse drug reaction. Adverse drug reaction be that is also important role. Then interpret the selected laboratory result. Actually we are lacking in this scenario also. Laboratory result, we do not aware with the laboratory result, and we cannot interpret sometime.
See, that's why it is very important. For example, हीमोग्लोबिन की कंडीशन है तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मेल में कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द लिमिट, एंड फीमेल में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन. Likewise, we can consider for WBC count, नॉर्मल कंडीशन में WBC काउंट क्या होना चाहिए, और अगर कोई पेशेंट को है मलेरिया है तो मलेरिया कंडीशन में WBC काउंट में क्या चेंजेस आएगा. सो लाइक दैट the interpretation, that is also the students they should have the knowledge about the interpretation of the laboratory result. Then pharmaceutical care services. अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे है कि ड्रग डिलीवरी that is very critical role, or how we should take such type of drug, that is also important. For example, especially in case of inhaler, so how we should use the inhaler, that is also important. So sometimes patient they are not asking to the pharmacy store, but the pharmacist they should provide the thorough knowledge about the inhaler, how they should be used. Then do patient counseling in community pharmacy. Community pharmacy में ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है. जैसे कि अभी कोरोना सिचुएशन जो भी था, तो कोरोना सिचुएशन में कम्युनिटी फार्मेसी में ज्यादातर पेशेंट, गांव में से ज्यादातर पेशेंट सीधा कम्युनिटी फार्मेसी जो CHC सेंटर रहता है वहां पे कांटेक्ट करते थे. सर्दी जुकाम या फिर खांसी जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो कि एक सिम्टम दिखाए गए हैं कोरोना के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि थोड़ा सा जुकाम हो गया तो सीधा पेशेंट जाएगा फार्मेसी स्टोर में या फिर CHC सेंटर पे. तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे थरल नॉलेज देना पड़ेगा कम्युनिटी को कि ये सब सिम्टम है, ये कोरोना के है या फिर नहीं है, या फिर कोई भी डिसीज है तो उसके बारे में थरल नॉलेज अगर फार्मासिस्ट को है तभी वो जाके पेशेंट को दे सकता है. तो कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि अगेन वी आर लैकिंग इन कंट्री, वी आर वेरी मच फार एज कंपेयर टू द US कंट्री. देन appreciate the concept of rational drug therapy. Rational drug therapy, that means prescribing right drug. First thing, that is बहुत सारी ड्रग है जो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोई सिम्टम लेके डायरेक्टली फार्मेसी स्टोर में जाता है और बोलता है कि ये मुझे ड्रग चाहिए, तो वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं वो भी चेक करना चाहिए. वैसे तो आफ्टर डायग्नोसिस ओनली वी कैन कम टू नो दैट व्हिच मेडिकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड टू द पेशेंट. लेकिन फिर भी अगर कोई डायरेक्टली फार्मेसी स्टोर पे है तो प्रिस्क्राइबिंग राइट ड्रग विथ एडिक्वेट डोज उसका सही होना चाहिए, अप टू द सफिशिएंट ड्यूरेशन. एंटीबायोटिक थेरेपी है तो 3 दिन 5 दिन तक चलती है, तो अप टू द पर्टिकुलर सफिशिएंट ड्यूरेशन. सो ये सब फार्मासिस्ट को बताना है, और फार्मासिस्ट शुड हैव दिस नॉलेज एंड दे शुड इन्फॉर्म टू द पेशेंट एंड appropriate to the clinical needs. Clinical needs है उसके appropriate रहना चाहिए and at lower cost. So at lower cost it should be available to the patient. So that's why currently generic drug है उसका scenario है. Generic drug अभी market में बहुत आ रही है और government भी उसको promote कर रहा है. So the reason behind this, at cheaper cost, effective drug should be reached to the patient. So that's why this all objective that has been included in your syllabus to understand about the basic of hospital pharmacy and community pharmacy. So these are the objectives. Then the topics which will be covered by these 2 sessions, that is hospital and its organization, hospital pharmacy and its organization. See again यहाँ पे 2 aspect हम देख रहे हैं, hospital pharmacy और clinic community pharmacy. तो हॉस्पिटल के रिलेटेड टॉपिक रहेंगे और कम्युनिटी फार्मेसी के रिलेटेड. देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मेडिकेशन एडहियरेंस, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, इंटरव्यू. देन कम्युनिटी फार्मेसी, देन फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, इंफॉर्मेशन सर्विस अबाउट द ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस. Usually state pharmacy council they are providing such type of information, and even in the case of in some of the college also they are having their own drug information service. Then patient counseling, education and training program in the hospital. Nowadays
Gujarat State Pharmacy Council, they have started the refresher course for the pharmacist person. So such type of training that should be provided in hospital also, and the pharmacists, they should also take the particular training. As a part of that, we in our college also we are doing the refresher course. Then prescribed medication order and communication skill, budget preparation and implementation, clinical pharmacy, over the counter, that means OTC product, drugstore management and inventory control, investigational use of drugs, and interpretation of clinical laboratory test. So these all the things we will start one by one. This all the lecture, and you will have this all the lecture series through the YouTube channel. देन एग्जामिनेशन स्कीम. तो एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे जैसे आपका थियरी सब्जेक्ट रहता है जीटीयू में, तो इंटरनल है दैट इज ऑफ 20 मार्क एंड एक्सटर्नल दैट इज ऑफ 80 मार्क्स. आउट ऑफ 20 यू नीड टू स्कोर 8 मार्क्स एंड आउट ऑफ 80 यू नीड टू स्कोर 32 मार्क्स. तो वेरी सिंपल. और ये सब्जेक्ट है, ये टोटली थियोरिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, बहुत ही समझना इजी है, समझने के लिए भी इजी है. और इफ यू आर कंसीडरिंग टू राइट दिस, then in writing also this is very much easy. The only thing that we need to understand that it is very much important if you are going as a career, if you are selecting in a community pharmacy or if you are selecting the career hospital pharmacy, तो ये बहुत ही important है. और वैसे भी अगर फार्मासिस्ट का रोल हम देखें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी अभी प्रमोट कर रही है ये सब चीजों को कि कैसे फार्मासिस्ट का रोल है दैट शुड बी इम्प्रूव्ड इन अ community pharmacy and hospital pharmacy. So these are the basic things and the introduction portion. आज हमने introduction discuss किया है. नेक्स्ट लेक्चर में जो शेड्यूल है आपका, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. So if you have any type of question related to this, then you can write in the comment box or in a chat box, you can write. So we are ending our session over here. If you have any question, or then you can write in the comment box related to this topic. I'm requesting all the students to subscribe this channel Pharma Planet for all kind of updates, or all the links related to the pharmacy practice I will share in this YouTube channel. So all the students, they are requested to subscribe this channel. So again, thank you very much. In next lecture we will start about the very first lecture, hospital and its organization. And if you have any type of question, you can write in the comment, and you can see this lecture or see this video anytime, and this will be available on a YouTube channel of Pharma Planet. Thank you very much.